starting with the theory of the mutual fund. The learning outcomes of the chapter are, after going through the chapter, the student shall be able to understand basics of the mutual fund, evaluation of the mutual fund, classification of the mutual fund, types of the scheme, advantages of the mutual fund, drawbacks of the mutual fund, and certain terms associated with the mutual fund. The terms stands for the net asset value. The terms assets that is stand for the entry load, exit load, something like that. Evaluation of the mutual fund, in that we are going to understand that say a kind of history, that say when it was started and everything. I don't believe that say there will be any question from this segment, because it only provides that say a kind of background, let's say when it was started. Then advantages is there is definitely a question that can be asked for, wherein investor point of view, diversification, then we understand transparency, then investment can be made as per the risk bearing capacity. There are number of such advantages, liquidity, those things that they have mentioned. Certain drawbacks and terms associated. Introduction. Mutual fund is a trust that pulls together the resources of the investors to make a foray into investments into the capital market, thereby making the investor to be part owner of the assets of the mutual fund. यानी म्यूचुअल फंड हर एक जगह से पैसा इकट्ठा करता है और वो पैसा वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल मार्केट में. कैपिटल मार्केट का मतलब है वी अंडरस्टैंड दैट से इन स्टॉक एक्सचेंज, एंड द इन्वेस्टर्स बिकम ओनर ऑफ द असेट. The fund is managed by professional money manager, that is through AMC, who invest the money collected from the different investors in various stocks. Stocks यहाँ पे broadly लेने का है हमको, any type of the security, bond that is similar to the debentures or other securities according to the specific investment objective. ये specific investment objective का मतलब ये है, let's say you want to take more risk, you want to take less risk, you want to take moderate risk, as per that so you can make the investment as established by the fund. If the value of the mutual fund investment goes up, return on them increases and vice versa. तो ये सिंपल थंब रूल है, हमेशा याद रखने का है कि जो सिक्योरिटीज़ में म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है उन सब सिक्योरिटीज़ का प्राइस बढ़ता है तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न पॉजिटिव होगा एंड वाइस वर्सा. The net income earned on the fund along with the capital appreciation of the investment is shared among the unit holders in the proportion to the units owned by them. यानी कि जितना उनका इन्वेस्टमेंट है उसके प्रोपोर्शन में उनको रिटर्न मिलेगा. म्यूचुअल फंड इज देयरफॉर एन इनडायरेक्ट व्हीकल फॉर द इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल मार्केट in return for administrating the fund and managing its investment portfolio. The fund manager charges fees based on the value of the fund assets. तो उनका जो फीस होगा वो in the proportion of the asset value होगा. So basically we understand that say investors are making investment in the fund and they get the return. How does a mutual fund work? Investing in the mutual fund is an expert's job in the present market scenario. A systematic investment in this instrument is bound to give rich dividend in long term. That is why over 2 crore investors have faith in the mutual fund. So number of investors keep on increasing and right now it is more than 2 crore. What is a mutual fund? Mutual fund is a trust. This is something which is importantly that you have to mention. That pulls, यानी वो इकट्ठा करता है सेविंग्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर अ कॉमन फाइनेंशियल गोल, यानी उन सबको क्या करना, रिटर्न चाहिए. अ म्यूचुअल फंड इज मोस्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर कॉशन इन्वेस्टर, यानी कि जो रिस्क एवर्स होते हैं, एज इट ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड प्रोफेशनली मैनेज बास्केट ऑफ द सिक्योरिटीज एट अ रिलेटिवली लो कॉस्ट. तो diversified, why? Because the number of securities and they belong further to number of sectors that have been included in the mutual fund. That is the first thing. Second, that they have provided at a low cost, इसलिए क्योंकि जो भी फंड मैनेजर का खर्चा है, so that will be spread over number of investors.
So we can say that the mutual fund are the trust which pulls the resources from the large number of investors through issue of the units for investment in the capital market instrument such as shares, debentures, bond and money market instrument. Money market instrument का मतलब है all short term investment, जिसमें कमर्शियल पेपर आएगा, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट स्कीम आएगा, वो सब जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो एग्रीमेंट आएगा, सच एज कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बॉन्ड. हु कैन इन्वेस्ट? एनीवन with an investable surplus of as little as few thousand rupees can invest in mutual fund by buying units, है ना, यूनिट्स यहाँ पे अलॉट होंगे इन्वेस्टर को of a particular mutual fund scheme that has a defined investment objective. तो हमेशा ऐसा होगा कि जो भी म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे वो म्यूचुअल फंड आपको बता के ही पैसे लेगा कि वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं. एंड द स्ट्रैटेजी, how mutual fund works for you. Money collected from the investor is invested by a fund manager जो AMC अपॉइंट करता है, asset management company, in different types of the securities. This could be range from the shares and the debentures to money market instrument जो ऊपर हमने देखा, depending upon the scheme's stated objective. So that's very clear. Scheme का objectives पहले से बताया जाएगा. The income earned through these investments and capital appreciation realized by the scheme is shared by its unit holders in the proportion to the units owned by them. Please refer the diagram above. Should we invest in stocks, यानी डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में? दैट इज द क्वेश्चन. तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड सर्टन एडवांटेजेस जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं. एक डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा प्रोफेशनली मैनेज, तीसरा लिक्विडिटी. दीज आर द एडवांटेजेस दैट से यू हैव. बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इक्विटी करना इज इन दैट केस ऐसा है कि भाई उसमें बेनिफिट नहीं है. डायरेक्ट इक्विटी में आप रिस्क ज़्यादा लोगे, देन इन दैट केस आपको रिटर्न भी प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा मिल ही सकता है. सो ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो भी डिसीजन होगा ऐसा भी हो सकता है दैट से उनका डिसीजन गलत प्रूव हो एंड अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर यू मे बुक अ लॉस. As soon as you have set your goals and decided to invest in equity, the question arises, should you invest in direct equity? Stock का मतलब होता है direct equity और mutual fund. Well, you need to decide what kind of investors you are. First, consider if you have the kind of disposable income to invest in 15 to 20 stocks. That is how many stock you will have to invest if you want to create a well-diversified portfolio. Remember a familiar adage, do not pull all your eggs in one basket. यानी हमको हमारा सारा इन्वेस्टमेंट एक ही सिक्योरिटी में रखना नहीं चाहिए. If a rupees 5,000 were all you have to spare, it would be impractical to invest across many stock. सिर्फ 5,000 रुपये ये तो आपके नामुमकिन है to make investment even in more than 2 stocks. एक स्टॉक भी कई बार नहीं आएगा ये 5,000 रुपये में. तो उस केस में डेफिनेटली से यू शुड मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड ओनली. Many beginners tend to focus on the stocks that have a market price less than 100 or 50, but that is what penny stock, और उसमें बहुत वॉलेटिलिटी रहता है और उसका प्राइस कई बार पैसे में भी चला जाता है. That should never be a criteria for choosing a stock. Also, the brokerage could eat your returns if you purchase small quantity of the stock. On the other hand, you would be able to gain excess wide basket of the stock for rupees 5,000 if you buy into a fund. अच्छा, तो आप फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये फ़ायदा रहता है. Investing in the funds, that would also be an easy way to build your equity portfolio over the time. Let's say you can afford to put away only 1,000 rupees a month in the market. You can simply invest in a fund every month through SIP, systematic investment plan, as a matter of the financial discipline. You can save yourself the trouble of the scouting for a stock every month. यानी कि हर महीने रिसर्च करके स्टॉक को चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्टी होता है कि कौन सा स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
इंडस्ट्री का एनालिसिस, कंपनी का एनालिसिस. सो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी लाइक बिग टास्क फॉर यू. तो SIP में क्या होगा कि आपका रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा डिसिप्लिन से, and you will be able to have the diversification. That brings us on the next point. Do you have the time to pick the stock? You need to invest the considerable amount of the time reading newspaper, magazine, reports, quarterly updates, industry report, talking to people who are familiar with the industry practices. तो एक टाइम की बात कर रहे हैं और दूसरा नॉलेज है ना. सब डेटा एक बार आ जाए आपके पास तो उसको भी क्या इंटरप्रेट करने का आपके पास स्किल होना चाहिए. Else you certainly won't catch a trend or pick a stock ahead of the market. How many great investors have you heard of who have not made investing their full-time job? Plus you may have the time but not the inclination. You have to be an active investor, which means continuously monitor the stock you pick and make changes, buy more, cut exposure depending upon the turn of events. These actions have cost as well, क्योंकि जैसे जैसे आप अपना पोर्टफोलियो चर्न करोगे, उसमें रीशफलिंग करोगे, उस हिसाब से क्या होगा, यू विल बी हैविंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. एज यू चर्न योर पोर्टफोलियो यानी कि रीशफल करोगे पोर्टफोलियो, यू बेयर एक्सपेंसेस सच एज कैपिटल गेन टैक्स. फंड्स डू नॉट पे कैपिटल गेन टैक्स when they sells a stock. All this assumes you know you are doing and have the skill to pick the right stock. You are likely to be better at investing in an industry you understand. Only too bad if that industry appears to be out of favor in the market. If you love the thrill of ups and downs in the stock market, you find yourself turning business channels and business newspapers hoping that you can pick the next Infosys. If you have an instinct for spotting stocks and importantly the discipline to act on it, if you have emotional maturity to cut across your losses when you are ahead, then you can trust yourself to invest in the market. Emotional maturity stands for that say you do not take the immediate decision. मार्केट नीचे जा रहा है, आपने इमीडिएटली सेल करना शुरू कर दिया. मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने इमीडिएटली खरीदना शुरू कर दिया. ऐसे हमको ओवर रिएक्ट नहीं करना है. दैट इज़ व्हाट इट सेज. अदरवाइज ये सब अगर आपके पास स्किल नहीं है तो क्या करो, हैंड ओवर योर मनी टू द प्रोफेशनल. म्यूचुअल फंड कुड बी बेस्ट एवेन्यू फॉर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर. रिस्क एवर्स का मतलब ये है कि जो रिस्क कम लेना चाहते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है. इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, तो वो कब इन्वेंट हुआ था? द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया स्टार्टेड इन द ईयर 1963 with the formation of UTI, Unit Trust of India, at the initiative of the Government of India and the Reserve Bank of India. The history of the mutual fund in India can be broadly divided into 4 distinct phases. First phase 1964 से 1987 तक. UTI was established in the year 1963 by an act of the Parliament. It was set up by the Reserve Bank of India and functioned under the regulatory and administrative control of Reserve Bank of India. In the year 1978, UTI was delinked from Reserve Bank of India, and IDBI, Industrial Development Bank of India, took over the regulatory and administrative control in place of Reserve Bank of India. The first scheme launched by UTI was Unit Scheme 1964. At the end of 1988, UTI had rupees 6,700 crores of AUM. AUM का मतलब होता है Asset Under Management. Second phase 1987 से लेकर 1993 तक entry of the public sector funds. 1987 marked the entry of non-UTI. तो वहाँ से UTI के अलावा भी दूसरे म्यूचुअल फंड्स को अलाउ किया. Public sector mutual funds have set up by the Public Sector Bank, LIC, GIC, General Insurance Corporation. State Bank of India mutual fund was first non-UTI mutual fund established in June 1987, followed by Canbank Mutual Fund in December 87. Punjab National Bank
1989, and so on. They have provided the list. At the end of 1993, the mutual fund industry had AUM, ये important है, AUM, वो उनका पूरा ग्रोथ बताता है 47,004 crores of rupees. थर्ड फेज, उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया गया. With the entry of the private sector in 1993, a new era started in Indian mutual fund industry. तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर नरसी राव and finance minister was Mr. Manmohan Singh, and that was the time period जब India was made open for the purpose of doing business say by outsiders. 1991 to 1995 जो president that is prime minister थे उन्होंने ये सब bold steps लिए थे, giving Indian investors a wider choice of the fund family, that is families. Also 1993 was the year in which first mutual fund regulation came into being, under which all mutual fund except UTI were to be registered and governed. The erstwhile Kothari Pioneer, now merged with Franklin Templeton, was the first private sector mutual fund registered in July 1993. The 1993 SEBI mutual fund regulations were substituted by more comprehensive and the revised mutual fund regulation in 1996. Industry now functions under SEBI mutual fund regulation 1996. Number of mutual fund houses went on increasing, with many foreign mutual funds setting up funds in India. The industry has also witnessed several mergers and acquisitions. As at the end of the January 2003, there were 33 mutual funds with total assets of 1,21,805 crores, UTI with 44,541 crores of AUM was way ahead of the other mutual funds. Fourth phase, since February 2003 to April 2014. In February 2003, following repeal of UTI Act 1963, UTI was bifurcated into two separate entities. One is specified undertaking of UTI with AUM of 29,835 crore at the end of the January 2003, representing broadly assets of US 64 scheme, assured returns and certain other schemes. Specified undertaking of UTI functioning under an administrator and under the rules framed by Government of India does not come under the purview of the mutual fund regulations. The second is the UTI mutual fund sponsored by State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda and LIC. It is registered with SEBI and functions under the mutual fund regulations. With the bifurcation of erstwhile UTI, which had in March 2000 more than 76,000 crores of the AUM, and with setting up of the UTI mutual fund conforming with to SEBI mutual fund regulations. With the recent merger taking place among the different private sector funds, the mutual fund industry has entered its current phase of consolidation and growth. Moreover, its efforts increase investors' awareness. Industry and the Security Exchange Board of India (SEBI) have launched several initiatives. So we know that there is absolutely transparency which we have in the mutual fund investments. That is because of all these like the steps that they have taken. These includes literature and campaigns and propagate the financial education to the various investor segment, including potential investors such as school, college student, homemakers, executive and so on. Mutual fund industry could not be saved itself from the financial turmoil of 2009 as security market tanked. In addition to that, absolution of entry load by SEBI also worsened the situation for the mutual fund industry, which was already struggling to maintain its economic viability during 2010 to 2013.
So we know that say 2008 was the time period in which say due to subprime crisis, the investors who had made investment in the securities, that is say in equity shares, they had a huge loss. That is what the time period which they are speaking about. Fifth phase, since May 2014, the re-engines, that is say the energies, the Indian mutual fund and increases penetration. SEBI introduced several measures with the formation of the new government and success measures taken in reversion of the negative trend. Situation improved significantly. Hence, since May 2014, the industry has witnessed steady inflow and increased the number of investors as well as asset under management. Mutual fund distributors connected themselves to small town and also enabled the investors to invest in appropriate scheme and the retail investors during the course of the volatility and experiencing them benefit of investing in the mutual fund. With hand holding of the investors and the mutual fund distributors who convinced them to stay invested and encouraging them to invest in the mutual fund, when the net asset value in the financial year 2015-16 witnessed steady positive net inflow, though same year was not good for the Indian security market. यानी म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्री अभी स्टेबल है एंड इट इज ग्रोइंग, दैट इज व्हाट इट सेज. सेकेंड वाला पोर्शन से बहुत कम आएगा ऐसा मुझे लग रहा है. नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स, ऑफ कोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड. देयर आर 3 different types of the classification of the mutual fund: functional, portfolio and ownership. Functional classification is divided into open-ended and close-ended. ओपन एंडेड का मतलब क्या होगा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि रेगुलरली सेल एंड परचेस होता रहेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टर को लिक्विडिटी का सपोर्ट मिलता है. मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए मुझे कहीं पे जाना नहीं पड़ता है, मैं म्यूचुअल फंड को ही मेरा यूनिट्स बेच देता हूँ. क्लोज एंडेड में क्या होगा, देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड फॉर विच माई इन्वेस्टमेंट इज ब्लॉक्ड इन द म्यूचुअल फंड स्कीम. 3 साल का लॉक इन पीरियड है. ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड मैं सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता हूँ, बट प्राइम दैट इज से मैं म्यूचुअल फंड को नहीं बेच सकता हूँ. ओपन एंड दैट इज जो क्लोज एंडेड स्कीम का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद म्यूचुअल फंड ही उसको दैट इज ये यूनिट्स को रिडीम कर देगा. इन एन ओपन एंडेड स्कीम द इन्वेस्टर कैन मेक एंट्री एंड एग्जिट एट एनी टाइम. ऑल्सो द कैपिटल ऑफ द फंड इज अनलिमिटेड and redemption period is infinite. On the contrary, in a close-ended scheme, investor can buy into the scheme during the initial public offer or from stock market after the units have been listed. यानी प्राइमरी से खरीदना है तो म्यूचुअल फंड से खरीदो जब उनका इश्यू आता है तभी, या तो सेकेंडरी में आप स्टॉक मार्केट से खरीदो. The scheme has a limited life at the end of which corpus is liquidated, यानी सारी यूनिट्स को रिडीम किया जाता है. इन्वेस्टर कैन मेक एग्जिट फ्रॉम द स्कीम बाय सेलिंग इन द स्टॉक मार्केट, यानी ये लोग सेकेंडरी मार्केट का बात कर रहे हैं, और एट द एक्सपायरी ऑफ द स्कीम और ड्यूरिंग रीपर्चेस पीरियड एट हिज ऑप्शन. इंटरवल स्कीम्स आर अ क्रॉस बिटवीन ओपन एंडेड स्कीम एंड क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर. These schemes are open for both purchase and redemption during a pre-specified intervals, namely monthly, quarterly, annually, at prevailing NAV based prices. Interval funds are very similar to the close-ended funds but differ on the following points. They are not required to be listed on the stock exchanges as they have an inbuilt redemption window. They can make fresh issue of the units during the specified interval period at the prevailing NAV based prices. Maturity period is not defined. तो यहाँ पे उन्होंने तीसरा एक यहाँ पे मेथड दैट इज स्कीम बताया है, इंटरवल स्कीम, जिसमें क्या होगा कि इन्वेस्टर को हर 3 महीने के बाद या हर 6 महीने के बाद या हर साल में एक बार से उनको ऐसा चॉइस दिया जाएगा कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम करना है तो आप हमारे पास रिडीम कर सकते हो. दूसरा,
यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एट द रेट ऑफ करंट एनएवी से नए यूनिट्स इशू कर सकते हैं। एंड दीज यूनिट्स आर नॉट सपोज टू बी लिस्टेड, जैसे कि क्लोज एंडेड फंड में होगा, क्योंकि क्लोज एंडेड फंड में अगर इन्वेस्टर को इन बिटवीन विड्रॉ करना है तो उसके पास चॉइस नहीं होगा अनलेस दे आर लिस्टेड, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिस्टिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड द मेच्योरिटी पीरियड इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज द पोर्टफोलियो क्लासिफिकेशन। फंड्स आर क्लासिफाइड इनटू इक्विटी फंड, डेट फंड एंड स्पेशल फंड्स। इक्विटी में भी फ्रेंड्स 3 टाइप के फंड होते हैं। वी अंडरस्टैंड एट्स द लार्ज कैप फंड, यानी कि लार्ज कैपिटलाइजेशन, मिड कैप फंड, मिड कैपिटलाइजेशन फंड एंड स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड हमेशा सबसे ज़्यादा रिस्की होते हैं, मिड कैप फंड्स कम, लार्ज फंड्स में से कंपैरेटिवली लेस वॉलेटिलिटी रहता है। वी अंडरस्टैंड एट से जो भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी का स्टॉक्स होता है दे आर से बिलोंगिंग टू द लार्ज कैप। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स का स्टॉक होता है दैट इज कंसिडर्ड टू बी अगेन द लार्ज कैप। एंड वी आर हैविंग से द डाइवर्सिफाइड फंड्स ऑल्सो वेरी ऑल द 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आर इंक्लूडेड। और उसमें भी से दे आर हैविंग अ क्राइटेरिया दैट से जब भी डाइवर्सिफाइड स्टॉक दैट इज से म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो then the mutual fund is having a certain restriction that say they cannot put more than a certain percentage into a specific category। यानी कि सपोज मैं डाइवर्सिफाइड फंड्स बोल के पैसा लेता हूँ and I make majority of the investment only in the large cap, then in that case ultimately I do not trust, say I that is say I am not doing what I told to the investor। that is the reason say they are having a criteria कि इससे ज़्यादा आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट प्राइमरली इन स्टॉक। अ शेयर ऑफ द स्टॉक represents unit of the ownership in the company. If a company is successful, shareholders profit in 2 ways. Stock may increase in the value or the company can pass its profit to the shareholders in form of dividend. If the company fails, shareholders can lose the entire value of his or her shares. However, shareholder is not liable for debts of the company. Limited liability का concept है। Equity funds are of the following type, namely growth fund, aggressive जो small cap का बात कर रहा था, income funds। They seek to provide a long-term capital appreciation to investor and are best in the long-term investment. Aggressive, they look for the supernormal returns for which the investment is made in startup, initial public offer, speculative shares. They are best to investors willing to take risk। और यहाँ पे सारे small cap funds आएंगे। Income funds, they seek to maximize present income of the investor by investing in safe stock, paying high cash dividend and high yield money market instrument. They are best to the investors seeking current income. Debt funds, debt funds are of 2 types, bond funds and the gilt funds। गिल्ड फंड्स का मतलब है जो भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज गिल्ट सिक्योरिटी। ओके, डेट फंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द बॉन्ड फंड्स। दे इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, एग्जाम्पल गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, मनी मार्केट। इन्वेस्टर्स सीकिंग टैक्स फ्री इनकम go in for the government bond, while those who are safe steady income buy government bond। तो जिनको टैक्स फ्री चाहिए या तो फिर स्टेडी इनकम चाहिए। और हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, हाई ग्रेड का मतलब है AAA रेटेड लाइक दैट। क्रेडिट रेटिंग इज ऑलवेज देयर। Although there have been past exceptions, bond funds tend to be less volatile than stock funds and often produces a regular income।
एट द सेम टाइम से नंबर ऑफ टाइम्स इट हैपन्स लाइक दिस दैट से AAA रेटेड फंड्स होते हैं, यानी कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट्स द प्रैक्टिकली वी हैव अ सिचुएशन. फॉर दीज रीजन्स इन्वेस्टर्स ऑफन यूज बॉन्ड फंड्स टू डाइवर्सिफाई. तो कोई पूरा का पूरा पैसा बॉन्ड फंड में नहीं लगाता है, कोई अपना कुछ प्रोपोर्शन फंड्स बॉन्ड फंड में लगाता है फॉर द पर्पस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, यानी मेरा कुछ पैसा सेफ रहे. प्रोवाइड अ स्ट्रीम ऑफ इनकम और इन्वेस्ट फॉर इंटरमीडिएट टर्म गोल्स. However, like stock funds, bond funds also have the following risk and they can lose money. Interest rate risk. This risk relates to the fluctuation in the market value of the bond consequent upon the change in the interest rate, that is yield to maturity, as discussed in the chapter of the security valuation. तो बेसिकली फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा समझने वाले हैं. ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग यील्ड टू मैच्योरिटी यानी रिटर्न टू इन्वेस्टर सिंपल लैंग्वेज में, और यहाँ पे प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. तो वो डायग्राम ऐसे जाता है. तो जो भी सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू गिरेगा इफ़ यील्ड टू मैच्योरिटी इंक्रीजेस. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिस्क विच यू हैव व्हेन यू मेक इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट. तो इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब क्या कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो जो भी सिक्योरिटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, दोज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़, प्राइस ऑफ ऑल दो सिक्योरिटीज़ विल डेफिनेटली फॉल डाउन. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड इंटरेस्ट रेट. उसका सिंपल रीज़न है फ्रेंड्स, P0 इज कैलकुलेटेड एज इंटरेस्ट इनकम फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू एट द एंड ऑफ द nth ईयर डिवाइडेड बाय 1 + k रेज़ टू n. जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमारा डिस्काउंटिंग का. तो जैसे जैसे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे प्राइस क्या होगा, गिरेगा. सिंपल रीज़न है, कुछ ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है. एज इंटरेस्ट रेट गोज अप मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉल्स एंड वाइस वर्सा. क्रेडिट रिस्क. दिस रिस्क इज सिमिलर टू द रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन और पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और बोथ बाय द बोरोवर्स ऑफ द फंड. तो ये हमको कैसे समझने का है कि एज एन इन्वेस्टर मैंने एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया और वो म्यूचुअल फंड में एक डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, और वो जो कंपनी है ना वो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे म्यूचुअल फंड को नहीं कर रही है. तो अगर म्यूचुअल फंड को इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो मुझे कहाँ से देगी. वो डिबेंचर्स डिफॉल्ट हो गए तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड को पैसा नहीं मिला, तो मुझे कैसे पैसा मिलेगा. तो जो सारे इन्वेस्ट दैट इज रिस्क म्यूचुअल फंड को है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन सच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग इन्वेस्टर, वो अल्टीमेटली मेरे रिस्क है. ऐसे हमको ये पूरा का पूरा सेगमेंट पढ़ने का है. दस रिस्क टेक्स प्लेस व्हेन अ म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्टेड मनी इन द बॉन्ड ऑफ अ कंपनी defaulted in the payment of the interest or principal. The risk is higher in case of the companies with lower credit rating. जिसका क्रेडिट रेटिंग कम है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, पर जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है उनमें भी डिफ़ॉल्ट का चांसेस तो रहता ही है प्रैक्टिकली. और उसमें तो इन्वेस्टर इज बेसिकली नॉट बीइंग कंपनसेटेड विद द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्यों? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अच्छा है और अल्टीमेटली बाद में डिफ़ॉल्ट होता है. Prepayment risk. This risk is related to early refund of the money by the issuer of the bond. I give you some explanation for say this. I give you some explanation for this. Suppose there is a company called ABC Limited. ABC Limited has issued debentures at the rate of interest of 12% for a time period of 20 years. तो 20 साल के लिए उन्होंने पैसा मार्केट से इकट्ठा किया, और मार्केट में जिस हिसाब से अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था उन्होंने 12% का इंटरेस्ट सबको देने का से अश्योरेंस दिया. नाउ सपोज कि 5 साल के बाद मार्केट का सिचुएशन ऐसा हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाउ 8% इन द मार्केट. तो ABC लिमिटेड के पास दो चॉइस है, या तो वो 12% के डिबेंचर्स को कंटिन्यू करें
या तो क्या करे, वो 8% के नए डिबेंचर्स इश्यू करे और एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स को वो रिडीम करे। एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स को अगर वो बाईबैक करके कैंसिल करते हैं यानी रिडीम करते हैं, यानी इन दैट केस क्या होगा, ये जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स होगा ना, उसका प्राइस बहुत ही इंक्रीज हो चुका होगा इन अ वे दैट इट मस्ट बी अवेलेबल इन द मार्केट एट अ प्रीमियम। एबीसी लिमिटेड के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंटिन्यू विद दिस डिबेंचर, या तो फिर उसको प्रीमियम पे परचेस करके उसको कैंसिल करें। नाउ इंपॉर्टेंटली व्हाट हैपेंस दैट से this is the kind of practical difficulty that the companies were facing for long term debt financing, इसलिए the companies are allowed to issue the security with callable feature। कॉलेबल फीचर में क्या होगा, कॉलेबल फीचर में ऐसा होगा कि ऐसी सिचुएशन में कंपनी के पास ये राइट है दैट से दे कैन रिडीम द डिबेंचर्स। उस केस में उनको क्या देना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो फेस वैल्यू होगा वो फेस वैल्यू प्लस कुछ अमाउंट का प्रीमियम देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो प्रीमियम इतना नहीं होगा दैट से विच इज गोइंग टू बी से इक्वल टू द करंट प्राइस, उससे कम ही होगा। दैट इज अ वे सो द कंपनी कैन इश्यू द सिक्योरिटी विद कॉलेबल फीचर। यानी क्या हुआ फ्रेंड्स, अभी इसके साथ आप रिलेट करो प्री पेमेंट रिस्क। मार्केट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इटसेल्फ इज स्ट्रगलिंग वेयर टू इन्वेस्ट, और ऊपर से और पैसा आ गया जिसको इन्वेस्ट करना है अभी। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमने 12% पे लगाया था वो पैसा अभी वापस आ गया और अभी उसको क्या करेंगे, 8% में हमको लगाना पड़ेगा। दिस इज द काइंड ऑफ रिस्क विच द म्यूचुअल फंड इज हैविंग एंड इन टर्न द इन्वेस्टर। This risk is related to the early refund of the money by the issuer of bond। अच्छा, दूसरा हम लोग यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है फॉर एग्जांपल 12% की जगह 15%, तो कंपनी पैसे वापस देगी नहीं देगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा ना तो कंपनी आके आपको रिडीम कर देगा। तो इन्वेस्टर को तो क्या हुआ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाता है तो लॉस है, ऊपर जाता है तो भी लॉस है। This is the kind of risk which investor has. This generally happens in case of falling rate of interest, है ना, 8%. When the company who already issued the bond at a higher interest rate issues fresh bonds at a lower rate of interest, exercising its right of early redemption of callable bonds and refunding the money raised out of the fresh issue। यानी 8% पे वो नया सिक्योरिटी इशू करेंगे और 12% वाला सिक्योरिटी रिडीम करेंगे। तो इन्वेस्टर को दिस इज द काइंड ऑफ द इशू दैट से दे आर फेसिंग। गिल्ड फंड्स दे आर मेनली इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। स्पेशल फंड्स आर ऑफ द 4 टाइप्स। तो देखो, इक्विटी फंड्स हो गया, डेट फंड्स हो गया, और ये स्पेशल फंड्स उसकी बात कर रहे हैं। इन दैट इंडेक्स फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, ऑफशोर फंड्स, सेक्टर फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, फंड ऑफ फंड, कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड, गोल्ड फंड्स। So these are the type of funds. So there are this kind of 8 different funds that they have specified. First is index fund. Every stock market has stock index which measures upward and downward sentiment of the stock market. Index funds are low cost funds and influence the stock market. The investor will receive whatever the market delivers. देखो, आई गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। जैसे कि हम लोगों ने सुना होता है निफ्टी के बारे में, हम लोगों ने सुना होता है सेंसेक्स के बारे में, एंड सो ऑन। सो देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल इंडाइसेस ऑल्सो। इसको बेसिकली इंडेक्स बोला जाता है। तो निफ्टी में 50 सिक्योरिटीज़ है, सेंसेक्स में 30 सिक्योरिटीज़ है। तो ये फंड में क्या करना है, ये फंड में दिमाग ही नहीं लगाने का है। जो प्रपोर्शन में ये 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, दैट इज से ये 50 सिक्योरिटी में ही हमको इन्वेस्टमेंट करना है,
एंड दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज इंडेक्स फंड्स। निफ्टी का कैलकुलेशन जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से वी आर रिक्वायर्ड टू हैव द इन्वेस्टमेंट इन दीज 50 स्टॉक्स। सेंसेक्स में जिस हिसाब से ये 30 सिक्योरिटीज का बाइफर्केशन है उसी हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज इंडेक्स फंड्स। सिर्फ ये दो इंडेक्स ही नहीं है, देर आर नंबर ऑफ इंडाइसेस दैट वी हैव, दैट इज से BSE 200, BSE 500, then internationally Standard and Poor 500 index, then Dow Jones index। तो ये जो म्यूचुअल फंड है से ये म्यूचुअल फंड में और कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ वो इंडेक्स को ही ट्रैक किया जाता है। सो एवरी स्टॉक मार्केट हैज stock index which measures the upward and downward sentiment of the stock market. Index funds are low cost funds and influence the stock market. The investor will receive whatever the market delivers. दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो फंड होता है ना उसको हम लोग पैसिव फंड भी बोल सकते हैं। पैसिव फंड इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो भी मैनेजर होगा ना उसको और कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ निफ्टी को ही ट्रैक करना है। तो ऑफ कोर्स से इफ एट ऑल ही डज नॉट हैव टू यूज हिज माइंड, देन इन दैट केस से अकॉर्डिंगली से उसका चार्जेस भी कम होता है। जो भी फंड मैनेजर का चार्जेस होता है वो भी वहाँ पे कम होता है, बिकॉज ही डज नॉट हैव टू से टेक द डिसीजन कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, कौन सा स्टॉक बेचो एंड सो ऑन। सो फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस मे बी प्रेफरेबल। दूसरा, वी ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट से गवर्नमेंट विल ऑल्सो मेक श्योर दैट से इंटरनेशनली ये सारे फंड्स रिपोर्ट होते हैं। जैसे कि USA का जो न्यूज़पेपर होगा या वहाँ का जो न्यूज़ चैनल होगा वहाँ पे भी निफ्टी का तो रिपोर्टिंग होता ही है। तो निफ्टी का रिपोर्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोग देख रहे हैं। सो गवर्नमेंट विल ऑल्सो मेक अ पॉइंट कि ये जो स्टॉक्स है ना उसका प्राइस एकदम से नहीं गिरे, क्योंकि ये सब स्टॉक्स का प्राइस एकदम से गिरेगा देन इन दैट केस इंटरनेशनली भी वी विल बी हैविंग से लाइक अ बैड इमेज। That is what say the kind of advantage that investor can have by making investment in these funds. International funds, a mutual fund located in India to raise money in India for investing globally, that is called international funds. India में located है to raise funds in India but investment किया जाता है internationally। तो all of you must be aware that say making investment in Google, making investment in Apple, making investment in Amazon is now practically possible for us। हम लोग ये सब म्यूचुअल फंड के थ्रू वो डायरेक्टली सब स्टॉक मार्केट में ये सब स्टॉक्स में हम लोग डायरेक्ट इक्विटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑफशोर फंड्स, अ म्यूचुअल फंड लोकेटेड इन इंडिया टू रेज मनी ग्लोबली फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो ऑफशोर फंड्स में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगा, म्यूचुअल फंड भी इंडिया का होगा, but we are going to raise the funds globally. Sector funds, they invest entire funds in a particular industry. Example, utility fund for utility industry like power, gas, public works. Then pharma sector है, PSU sector है, IT sector है, banking sector है, ऐसे sector funds. Money market जिसमें short term investment में, these are predominantly debt oriented scheme, repurchase agreement, then commercial paper and so on, whose main objective is the preservation of the capital, easy liquidity and moderate income. To achieve this objective, liquid funds invest predominantly in safer short-term instrument like commercial paper, like certificate of deposit scheme, like treasury bill, like government securities. These schemes are used mainly by institutions and individuals to park their surplus funds for short term period of the time. जैसे भी हम लोग कुछ ऐसा पढ़ते थे, अगर आपको याद है तो बाउमोल्स मॉडल पढ़ते थे या मिलर और मॉडल पढ़ते थे, जो ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता था वो कुछ इसके रिलेटेड है। एंड दीज आर प्रैक्टिकल थिंग्स पॉसिबल जिसमें आप सैटरडे को भी इन्वेस्ट करके मंडे को रिडम्पशन ले सकते हो। सो यू हैव लाइक द रिटर्न टू बी रिसीव्ड फॉर द डिफरेंस ऑफ द टाइम पीरियड। These funds are more or less insulated from the changes in the interest rate in the economy and capital structure, the current yield prevailing in the market. तो इन सब का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा immediate इफेक्ट नहीं आता है।
फंड ऑफ फंड, यानी एक फंड दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करता है. फंड ऑफ फंड, एज द नेम सजेस्ट, आर द स्कीम्स इन which invest in other mutual fund schemes. The concept is popular in markets where there are number of mutual fund offering, and choosing a suitable scheme according to one's objective is tough. Just as a mutual fund scheme invests in a portfolio of the securities such as equity, debt, etc., the underlying investment for a fund of fund is units of other mutual fund schemes, either from the same fund family or from other fund houses. यानी कि रिलायंस का खुद का जो फंड है वो रिलायंस के ही दूसरे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देगा, या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का खुद का फंड है वो दूसरे म्यूचुअल फंड में अपने ही दूसरे स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो फिर वो दूसरे सुंदरम है, या तो फिर ऐसा सब म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करेगा. कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड. The term capital protection oriented scheme means mutual fund schemes which is designed as such and which makes an effort which endeavors to protect the capital invested therein through a suitable orientation of the portfolio structure. The orientation towards the protection of the capital originates from the portfolio structure of the scheme and not from any bank guarantee, insurance cover, etc. SEBI stipulation requires these types of the schemes to be close-ended in the nature, listed on the stock exchange, and intended portfolio structure would have to be mandatorily rated by a credit rating agency. A typical portfolio structure could be to set aside major portion of the asset for capital safety and could be invested in highly rated debt instrument. The remaining portion would be invested in equity or equity rated instrument to provide capital appreciation. Capital protection oriented scheme are the recent entrant in the Indian capital market and should not be confused with capital guarantee schemes. तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान इस हिसाब से किया जाएगा सो दैट एटलीस्ट आपका कैपिटल इंटैक्ट रहे. गोल्ड फंड, जिसके बारे में हमने बहुत सारा सुना ही होता है कि इंस्टेड ऑफ कीपिंग द फिजिकल गोल्ड, नाउ यू शुड हैव द इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड थ्रू ई पेपर. सो क्या होगा कि जो आपका इन्वेस्टमेंट जो है उसका प्राइस गोल्ड प्राइस से कनेक्टेड होगा. सो इफ एट ऑल यू वांट टू, you have a plan to buy certain amount of the gold, say over the period of time, then in that case say you can definitely invest say in this kind of like the e-paper, जिसमें आपका पैसा पूरा का पूरा सेफ रहेगा. At the same time you don't have that hassle to say store that, you don't have say any risk of say the it is getting stolen. That is what we understand is a gold fund. The objective of these funds is to track the performance of the gold. The units represents the value of the gold or gold related instruments held in the scheme. Gold fund which are generally in form of an exchange traded fund. Exchange traded का मतलब है कि ये exchange में आप trade कर सकते हो. जैसे कि इन्फोसिस का सिक्योरिटी वो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके बेच सकते हो, खरीद सकते हो. Are listed on the stock exchange and offers investors an opportunity to participate in the bullion market without having to take the physical delivery of the gold. And this is very important. So यहाँ पे उन्होंने बताया है कि risk and reward potential for the types of fund, high risk and high return, aggressive growth funds, growth stocks, growth and income stock, moderate risk कितने होगा, low risk money market instrument, short term intermediate bond market. Balance funds में क्या होता है friends? There is certain amount is invested in equity and certain amount is invested in debt. Funds are classified into public sector mutual fund, private sector mutual fund, foreign mutual fund. Public sector mutual fund are sponsored by a company of a public sector. Private sector mutual fund is sponsored by a company of a private sector. Foreign mutual funds are sponsored by the companies for raising funds in India, operate from India and invest in India.
डायरेक्ट प्लान्स इन द म्यूचुअल फंड, AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी, हमारा पूरा का पूरा जो पैसा है ना वो AMC मैनेज करता है. पोर्टफोलियो मैनेजर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द AMC ओनली. हैव बीन परमिटेड टू मेक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स even before 2011, but there were no separate plans for these investments. These investments were made in the distributor plan itself and were tracked with a single NAV, one of the distributor plans. Therefore, an investor was forced to buy mutual fund based on the NAV of the distributor plans. However, things changed with the introduction of the direct plan by the SEBI on 1st of January 2013. Mutual fund direct plans are those plans where AMC or mutual fund houses do not charge distributor expenses, trail fees and transaction charges. यानी ये सब expenses वो लोग charge कर सकते हैं नहीं है. NAV of the direct plan are generally higher in comparison to the regular plan. Studies have shown that the direct plans have performed better than regular plan for almost all mutual fund schemes. That is what we understand is a direct plan. Types of schemes.